some of the most professional pilots. The flypath lined up today comprising a total of 40 aircraft, 22 fighters, 11 transport aircraft and 7 helicopters. We also have 3 aircraft from the Indian Coast Guard and 1 aircraft of the Indian Navy in today's flypast. These aircraft are taken off from different air bases, flying all the way to Kartagapad today and present an aerial salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. The first formation will be Ajay Formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for their unmatched power and lethality across the world. Shortly, 3 Apache helicopters will be flying in over the saluting dares in victory formation. जी हाँ, निगाहें आकाश की ओर है और वायु विचरण करते हुए, वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज कुछ ही पलों के पश्चात कर्तव्य पथ के ऊपर नजर आएंगे। निगाहें उन्हें ढूंढ रही हैं उत्कंठा के साथ और यकीनन भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम चरितार्थ होने की ओर अग्रसर। सबसे पहले हम देखेंगे अजय फॉर्मेशन को, जिसपे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में नजर आएंगे। उपस्थित जनसमूह रोमांचित है, आह्लादित है, उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा। And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other 2 aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system, and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see formation airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi, with Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, विक्ट्री फॉर्मेशन में तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की, 2 डॉर्नियर और 1 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palan Air Base. AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक्य के समय पर सहायता।